Welcome back, students. In previous video we have started about the bacteria, pathogenic bacteria, that is Bacillus anthracis. We have discussed general introduction about Bacillus anthracis, history about the Bacillus anthracis, morphological characteristics about the Bacillus anthracis, and biochemical characters as well as classification of the Bacillus anthracis. Now in this lecture we are going to discuss our further points, that is virulence factor, pathogenicity, pathogenesis, and anthrax cycle. Okay, so these certain points we are going to discuss in this video. So let's start with the virulence factor. As I told earlier, now virulence factor is somewhat similar to that of the antigenic structure. Antigen, these are the antigenic structure, these are the structure that causes the disease, or we can say that are responsible to cause the disease. Virulence means what? Virulence also stands for the same. If we will define the virulence, then virulence is the factor, or virulence is the term which is responsible to cause the disease. ओके सो उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि वो उसके वजह से डिसीज कॉज होता है. सो देयर आर टू मेन थिंग्स इनटू द स्ट्रक्चर, और वी कैन से ऑनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द Bacillus anthracis. The first is capsule and second is anthrax toxin. Okay, this anthrax toxin is also known as the, or not known, but anthrax toxin ये exotoxin है. ठीक है, तो bacterial capsule, this is made up of polypeptide and exotoxin is there. This capsular polypeptide, this helps virulence. How this helps in the virulence? So it helps in the virulence by inhibiting the phagocytosis activity. Now what is phagocytosis? Phagocytosis is nothing but engulfment of pathogenic organism. It is the defense system of human being or defense system of the host. यहाँ पर क्या होता है? फैगोसाइटोसिस एक्शन होती है. फैगोसाइटोसिस एक्शन मतलब एंगल्फमेंट. आपकी सेल, फैगोसाइटिक सेल, देन इट मे बी मैक्रोफाज, इट मे बी डेंड्राइटिक सेल, इट मे बी न्यूट्रोफाइल. ओके, तो ये आपकी फैगोसाइटिक सेल क्या करती है? एंटीजन के अराउंड एक ऐसा सर्कल तैयार करती है कि एंटीजन उसमें ट्रैप हो जाता है, एंड देन दैट सेल एनगल्फ दैट एंटीजन, एनगल्फ दैट फॉरेन पार्टिकल, एनगल्फ दैट पैथोजन. ओके, अल्टीमेटली बाय एनगल्फिंग दैट पैथोजन there will be no any kind of disease. Okay, so it is one of the defense mechanism of human body or human host. So ये कैप्सूल क्या करती है? कैप्सूल इट इनिबिट्स दिस फैगोसाइटिक एक्शन. तो फैगोसाइटिक एक्शन इनिबिट हो गई, यानी कि आपकी डिफेंस सिस्टम इनिबिट हो गई. ओके, एंड इट मे लीड टू द डिसीज, इट मे कॉज द डिसीज. So ये capsule is responsible, or so capsule act as the virulence factor. Next is loss of the plasmid which control capsule production leads to the loss of virulence. Means when plasmids are lost from the cell, okay, or when plasmids are been lost, this plasmid, इसका function क्या है? It controls the formation of the capsule. But once plasmid is been lost, there will be no control in the formation of the capsule. तो capsule का production तो increase ही होना है. ठीक है, so that is the main second reason behind this virulence. नेक्स्ट इज लाइव एटीन्यूटेड एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन वॉज ऑब्टेन. मतलब इस तरीके से, दिस इज हाउ द लाइव एटीन्यूटेड एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन वॉज ऑब्टेन. In a previous video I have told about what is attenuated vaccine. तो attenuated vaccine it was first discovered by scientist Louis Pasteur, और उस वैक्सीन को नाम दिया गया है, it is also known as the Stern vaccine. Okay, now this anthrax toxin अभी कैसे डिटरमाइन किया कि पहले अभी हमने डिस्कस किया कैप्सूल के बारे में. एंथ्रैक्स टॉक्सिन ये हम और डिटेल में पैथोजेनेसिस में देखेंगे. ठीक है, कि क्या है एक्सोटॉक्सिन और क्या है कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड. अभी अगर एंथ्रैक्स टॉक्सिन के बारे में बात करूँ तो कैसे ये फाउंड हुआ, इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? तो एंथ्रैक्स टॉक्सिन वॉज आइडेंटिफाइड बाय द फाइंडिंग दैट
injection of sterile plasma of guinea pigs. Okay, injection of sterile plasma of guinea pigs which were suffering from the disease known as the anthrax. उनका प्लाज्मा इंजेक्ट किया इनटू दी हेल्दी गनी पिग्स. रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ कि हेल्दी गनी पिग्स वेयर किल्ड. Okay, they were killed and that death could be prevented by the immune sera. अब वो क्यों kill हुए? Because previous जो गनी पिग्स जिनका प्लाज्मा हमने इंजेक्ट किया है, प्लाज्मा इज द फ्लूइड. ओके, जिनका प्लाज्मा हमने इंजेक्ट किया इनटू द हेल्दी पिग्स, तो डिसीज पिग से हमने हेल्दी पिग में इंजेक्ट किया है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दैट डिसीज. ओके, पर ये सब जो कॉजेस है, okay, it can be prevented by the immune sera. Now what is this immune sera? Immune sera is also known as the anti-serum or anti-sera. This is the blood serum from the person or animal whose body have built up the antibodies. Okay, that is known as the immune sera. Immune sera ये एक टेक्निक है. ओके, कौन सी टेक्निक है? दैट इज द ब्लड सीरम फ्रॉम द पर्सन और एनिमल जिसकी बॉडी ने उस डिसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए गए. सो वो एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी हम वहाँ से लेकर टू द हेल्दी पर्सन इंजेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इम्यून सेरा. The next part of the virulence factor is toxin, consists of the three factors: edema factor which is known as the factor 1 or OF, protective factor PF or factor 2, and last is the lethal factor factor 3. ये in detail हम pathogenesis में study करेंगे. Okay, so this is all about the virulence factor. Now if we will see the anthrax cycle, अगर anthrax cycle हम देखें, anthrax cycle means how this anthrax transfer the disease or transmit the disease, that has been shown in this diagram. See, now this diagram, it is the in the we can say cyclic form or circular form of the diagram. Anthrax, it begins from the anthrax spores. The green color जो दिखाया गया है, so that are the spores of the anthrax. तो ये दो वे में हो सकता है. इट मे आइदर इनहेल और इंजेस्टेड बाय द एनिमल्स लाइक कैटल. ओके, स्पोर्स ये आइदर इनहेल हो गए या इंजेस्ट हो गए बाय द एनिमल्स. देन टू द फ्रॉम द एनिमल it may transfer to the flies, okay, by biting, or this flies can transfer this spores to the cattle by the biting. Okay, once they are being transferred to the flies, then these flies definitely they may bite to the human beings, and that spores may get transferred to the human beings, okay, in the cutaneous form. Next, if this biting fly bites to the cattle, that cattle may also suffer from the disease known as the anthrax. Okay, या फिर directly spores through the cutaneous form, मतलब it may infect directly onto the skin. ओके, मतलब अगर स्किन में कोई लीजन हुआ होगा, कोई स्क्रैच हुए होंगे एंड वो जगह हील हुई नहीं होगी, ओके, इट मे नॉट बी क्योर्ड, तो फिर उस जगह स्पोर्स अटैक कर सकते हैं. तो डायरेक्टली इन द क्यूटानियस फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर कैटल के जो थ्रू कैटल ऑल्सो इट मे ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द इंजेक्शन और इनहेलेशन. ओके, लाइक अगर उस कैटल को बाइट किया होगा फ्लाई ने, या फिर स्पोर का उसे इन्फेक्शन हुआ होगा, तो बाय कंज्यूमिंग द मिल्क ऑफ द कैटल इट मे ट्रांसफर टू द ह्यूमन बींग्स. ओके, देन वेजिटेटिव फॉर्म्स, बैक्टीरियल इन एनिमल वेस्ट एंड डिकम्पोजिशन. एनिमल वेस्ट में भी वो स्पोर्स हो सकते हैं, सो थ्रू एयर इट मे ट्रांसफर टू दैट human beings. तो ऐसे is thousands of ways to transfer this spores of the anthrax. So this is the anthrax cycle कि कैसे किस जरिए से ह्यूमन बींग्स तक वो पहुंचता है या फिर कैटल तक पहुंचता है, एंड इट मे कॉज द डिसीज एंथ्रैक्स. लेट्स सी द पैथोजेनेसिस.
नाउ इन पैथोजेनेसिस, इफ वी विल सी अब पैथोजेनेसिस क्या है ये मैं आपको बता दूं. पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनिसिटी ये दो अलग अलग कंसेप्ट है. ओके, पैथोजेनेसिस इट इज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज. ओके, कैसे ओरिजिन हुआ है और कैसे डिसीज डेवलप हो रहा है, मैकेनिज्म, दैट इज द पैथोजेनेसिस. फिर पैथोजेनिसिटी क्या है? पैथोजेनिसिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग पैथोजेनिक. Okay, so that is the pathogenicity. So we are seeing now pathogenesis, that is origin and development of disease. तो ये pathogenesis it is related to the virulence factor. जो हमने virulence factor में term देखे कि दो main agents है which are responsible to cause the disease, that is the capsule and second one is the bacterial capsule and second is the exotoxin. Okay, सो अभी हम देखेंगे कैप्सुलर और बैक्टीरियल कैप्सूल. बैक्टीरियल कैप्सूल क्या है? इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन. इट इज द स्लिमी लेयर. ओके, ये जो कैप्सूल है ये स्लिमी लेयर है, स्लाइमी लेयर है, सॉरी, इट इज द स्लाइमी लेयर. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्लाइम लेयर दे कैन बी एंटीफैगोसाइटिक. Okay, means they prevent the phagocytic action as I told you earlier. This is just about the capsule कि वो एक slimy layer है, slimy layer which is made up of the glycoprotein और peptidoglycan और उसके वजह से वो phagocytic action stop करते हैं. Okay, defense system stop करते हैं. That is about the bacterial capsule. Second is your exotoxin. Now exotoxin, this is made up of three components: edema factor. Now first, edema factor. Edema means what? It is responsible for the inflammation of various parts. Okay, that is the edema. So this edema factor, it results in severe inflammation or we can say severe edema. Okay, so that is all about the edema factor. Now next, second, the main we can say toxin is the सेकेंड जो टॉक्सिन है वो है लीथल टॉक्सिन. लीथल टॉक्सिन एज द नेम इंडिकेट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू नेक्रोसिस. ओके, ये जो लीथल टॉक्सिन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वी कैन से टिश्यू नेक्रोसिस और टिश्यू डैमेज. लास्ट है प्रोटेक्टिव एंटीजन फैक्टर, दैट इज PFA. अब इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंथ्रैक्स वैक्सीन. Okay, plus it mediates or facilitates entry of edema factor and lethal toxin inside the cell. क्या करता है ये? It mediates the entry of this edema factor and lethal toxin inside the cell. Means what? It helps in the entry. ये जो प्रोटेक्टिव एंटीजन फैक्टर है इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ edema factor as well as lethal toxin. Then why it is known as the protective factor? The reason behind this is यही फैक्टर से वैक्सीनेशन तैयार किया जाता है. मीन्स उसका जो एंटीजेनिक पार्ट है, antigenic part is been killed, okay, and then the vaccine is been made, so it act as the protective factor also. Simultaneously it provides the entry of this edema factor and lethal toxin. Okay, so it is known as the प्रोटेक्टिव एंटीजन फैक्टर. अब ये जो इडीमा फैक्टर है, अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बोलूँ तो इडीमा फैक्टर इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट स्पेसिफिकली elevate the intracellular cyclic adenine monophosphate level. Okay, cyclic मतलब क्या करता है ये? It elevate, it promote the cyclic AMP level that regulate. ये cyclic AMP का function क्या है? It regulate the cellular responses. Okay, it regulates the cellular responses. लेकिन ये pathogen it attacks on this CAMP. Due to this there is disturbance in the cellular responses. So that is the edema toxin and it may be poisoning the immune system. Okay, and thus facilitating the survival of bacteria in the host. तो ऐसा कुछ edema factor है which is responsible to cause the disease known as the anthrax. इसका अगर हम mechanism देखें तो mechanism is firstly what happens at first this
protection antigen factor. Okay, this protection antigen factor, it binds the complex to the receptor on the surface of macrophage. मतलब as protective antigen factor क्या करता है, it gives the entry of ED factor and lethal toxin. तो ये this factor, firstly this factor binds to the complex of the complex to the receptor on the cell of the macrophage. macrophage cell है, macrophage cell कौन सी है, it is the phagocytic cell. मैंने आपको जैसे बताया phagos macrophage dendritic cell, ये सब phagocytic cell है. तो ये प्रोटेक्शन एंटीजन फैक्टर ये बाइंड होता है रिसेप्टर पे. वो रिसेप्टर किसका है, मैक्रोफाज सेल का. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, आफ्टर बाइंडिंग व्हाट हैपन, देयर इज प्रोटियोलाइसिस ऑफ EF, that is edema factor and lethal factor are released. मतलब प्रोटियोलाइसिस होता है, ब्रेकेज होता है, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड देन रिलीज. प्रोटीन स्ट्रक्चर मतलब जो कैप्सूल जो बनी है, ओके, it has been broke and then there is release of this toxic factor, edema factor and lethal toxin factor. Then this toxic complex is lethal and it produces the we can say produces the toxin, produces vascular permeability, and edema leads to the death of the infected animal. If it is not tolerable, then definitely it may lead to the death. And this anthrax toxin inhibits the phagocytosis. तो ऐसा जनरल मैकेनिज्म है अबाउट दिस एंथ्रैक्स. Okay, so this is all about the pathogenesis. Infection definitely it begins with the inhalation of these spores. In detail मैंने आपको already बता दिया है. So this is all about the pathogenesis of the anthrax. Next is your pathogenicity. Okay, before seeing the pathogenicity मैं आपको बता दूँ कि ये जो इन्फेक्शन है, तो इट इज़ द देर आर टू टाइप्स एज आई टोल्ड, क्यूटेनियस एंड पल्मनरी. तो क्यूटेनियस और पल्मनरी ये जो दोनों इन्फेक्शन है, पल्मनरी इट इज़ सेवियर टाइप ऑफ द इन्फेक्शन एंड इट ऑकर्स वेरी रेयरली. ओके, जो पल्मनरी इन्फेक्शन है इट ऑकर्स वेरी रेयरली. नाउ इनहेलेशन anthrax is the most lethal type of anthrax. Incubation period है 1 to 7 days, possibly ranging up to 42 days. ओके, 42 डेज उसकी रेंज. 90, अगर क्यूटेनियस एंथ्रैक्स की बात करें तो 95% ऑफ द एंथ्रैक्स इन्फेक्शंस, ये लैब डायग्नोसिस में फिर से रिपीट होगा ही. व्हेन द बैक्टीरियम एंटर्स अ कट और अ स्क्रैच ऑन द स्किन, इट मे ऑल्सो स्प्रेड बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स, स्पोर जर्मिनेशन, टॉक्सिन प्रोडक्शन, रिजल्ट इन itchiness and bumping, that is inflammation, vesicle, and then definitely there is black ulcer. So it is as I told in earlier video कि उसका नाम एंथ्रेकोस इससे डिराइव हुआ है. एंथ्रेकोस मीनिंग कोल, ब्लैकिश कलर. ओके, सो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यू कैन सी इन डायग्राम, ब्लैक अल्सर लाइक फॉर्मेशन इज बिन देयर. Next is pathogenicity. Now pathogenicity, anthrax is a disease of cattle and sheep, but it also occurs in the horses and swine, pig. Okay, but experimentally most animals are susceptible to a greater or lesser degree. मतलब mostly primarily ये कैटल्स को होता है या फिर एनिमल्स को होता है, एंड देन सेकेंडरीली human beings are being infected. Okay, and if you will see, these bacilli are found in the large number in local lesion, heart, blood and spleen. More than 10⁸ bacilli per ml is been found, so the count is higher. That is all about the pathogenicity, pathogenesis, and we can say how the disease is been spread, anthrax cycle. In next lecture we will see our remaining part. Thank you.